वेलकम बैक न्यू वीडियो। तो ये मॉडल है X652 स्मार्ट 5। प्रॉब्लम सिंपल है, चार्जिंग प्रॉब्लम में हमारे पास आया है कि चार्जिंग नहीं कर रहा है। तो हमने इसको डायग्नोज करना है और देखना है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या इसके अंदर मसले मसाइल हैं। वीडियो के अंदर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ऐसी इंफॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चार्जिंग के वोल्टेज चेक करेंगे कि बैटरी कनेक्टर पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं इसके। बैटरी कनेक्टर पे 1.76 आ रहे हैं, कम है। इस पर चार्जिंग शो नहीं होती, तो ये मेरे ख्याल से कम है। तो ये ड्रॉप भी होते हैं। मैं आगे दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं। ये मेन फ्लैक्स है जो चार्जिंग सब बोर्ड से मदरबोर्ड को कनेक्ट करती है। तो वहाँ पे 5.25 आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं। तो अब इसकी, जैसे कि आप वीडियो के अंदर एक साइड पे देख रहे हैं कि मैं कौन सी लाइन चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं। तो इसकी जो डायग्राम की वीडियो हो वो मैं इस वीडियो के एंड पे लगा दूँगा, ताकि आप सब भाइयों की रहनुमाई हो। और उसके बाद इसका चार्जिंग सेक्शन इसके नीचे है, तो इस शेड को हमें काटना पड़ेगा। ठीक है, काट के निकालना पड़ेगा। और इसके नीचे OBPIC में मेरा ख्याल है OBPIC क्रॉसिंग नहीं दे रही है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो वो इसके नीचे लगी हुई है। चलिए इसको काटते हैं और चेक करते हैं, देखते हैं इसके नीचे क्या माजरा है। तो काटने के बाद अभी इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद इसको चेक करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इसको क्लीन कर लें। इसके अंदर चार्जिंग IC भी है और OBPIC भी है, दोनों कनेक्शन यही है। ठीक है, तो इसको चेकिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इसको चेक करूँगा तो इसकी जो थंबनेल की मतलब कि छोटी सी जो पिक है, जो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, उसको मैं साइड पे लगा दूँगा वीडियो के। अभी ये देख लें आप, साइड पे लगी हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे, पहुंचती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लाइन चेक करेंगे। अभी ये LCD में आप देख रहे हैं एक साइड पे पिक्चर शो हो गई है। ठीक है, ये हमने चेक करना है। जिस भाई ने ये पिक्चर देख ली होगी उसको तो समझ आ गई होगी। बैटरी कनेक्टर से यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, 5.2। अब ये देखने में मुझे लग रहा है कि IC ब्लास्ट हुई है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा कार्बन आया हुआ है। तो हम इसको ब्लास्ट करके दिखाएंगे आपको, एक जंपर करके फिर इसको दिखाएंगे कि ये कैसे ब्लास्ट होती है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गए। तो 5.2 20 यहाँ भी आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ नहीं आ रहे। ठीक है, यहाँ आ रहे हैं 3.75। अभी अभी देखें, अभी भी आ रहे हैं। इसका मतलब इसको हमने दबाया तो आ गए हैं, तो इसका मतलब ये IC के अंदर लूजिंग है। अभी देख लें, कभी 2.5 हो रहा है, कभी 5.3 हो रहा है, कभी 3.4 हो रहा है। तो काइंडली आगे सेविंग से ही पहुँच नहीं रहे। तो इसको हम अभी एक जंप करेंगे, आप वीडियो के अंदर देखते रहिएगा। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude.
Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह फॉल्ट आपने क्लियर कर लिया है। चार्जिंग पे पीस
Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.